Okay. So today we are going to learn about the date functions using in MySQL. At first, we will create a table that will include the date values. Beforehand, we had created the tables that had the text values and the numerical values. Now we are going to create a table that will have some date values. Okay. So we are creating a table birthday that will have two fields. One is name and other one is date. Okay. dob dob will contain the date of birth. Okay. So the query will like this. Sorry, I haven't selected any database. So the table birthday has been created. Okay, so how you are going to include a field name that will have um, date as its data type like this. You don't need to write down the size. Also for varchar we needed to write down the size, for integer we needed to write down the size, but for date there is no need to write down the size. Okay, so Okay, in this ma'am. table there are two fields. One is name with varchar and other one dob with the data type date. Let me describe the table. So this is the table. You see, the type is date. Okay. Now, how will you insert some date values to a table? So, Ma'am, using date the value. format. Ma'am, using the format year. Month. I will show you in both way. One using the format and other one using the default format without using any format. Okay, I will show you in two ways. See, this one is without using any format. That means we are using the default format of the date. The what is the default format of the date value for MySQL? YYYY/mm/dd. This is the default format. If you are using this format, then you don't have to use any date format. ठीक है? Year देना है 4 digit का year, then hyphen, then month, then date. This is the default value. See what has been written. See, got it? Yes, ma'am. Okay. Now I will show you how you can insert in a particular format. Okay. Say I want to store the value in the format. Uh, I have the value in the format ddmmyyyy. In this way, I want to store the data in this format. I want to do the insertion. Concentrate on my sentence. In this way I want to for do the insertion. डेटाबेस में जिस तरीके का वैल्यू स्टोर होना है उसी फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर होगा. इफ यू आर यूजिंग द डेट वैल्यू देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस. डेट वैल्यू जैसे वो स्टोर करता है वैसे ही स्टोर होगा. लेकिन when you are inserting data, you want to do the insertion in a particular format. So you want to do the insertion in ddmmyyyy format. Then how will you do? I'm showing you an example, then I think it will be clearer for you. Say in this way, insert into birthday values. What I have done, the name is there Alicia, and how I have inserted the date, the function I have used str to date. Okay, that I am converting the particular string to date. This is a string. Now this is a string. This is not a date because I am using some other format, and it will not be able to convert the string. Here also it was a string. ऊपर में जो insertion statement I had used, it is also a string. It was also a string, but the SQL had converted this string to the date automatically.
because I was using the default format. But if I am not using the default format, I am using some other format, then in this way it will happen that you have to use the function str2date. Specifically you have to use the function. By default अब ये काम नहीं करेगा. Then you have to write down the format, in which format you are doing the insertion, because the computer don't know whether this is the date or this is the date. The computer don't know. So you have to specify the format, that the first thing is %d, then %m, then since I am writing the year in 4-digit format, this is %Y. Small y specifies 2-digit year. %Y specify 4-digit year. Okay, so %d will mean date in 2-digit, %m will mean month number in 2-digit, and %Y will mean year number in 4-digit. Okay, in this way it will work. Have you understood this syntax? Otherwise I will repeat it again. Yes, ma'am. Understood. Okay, so in this way there are two things, that you can use the default format for doing the insertion, or you can use a particular format. There you have to convert the string to date by using the specific function. But what will happen, all the dates will be stored inside the database in that format, in the default format only. That will be stored inside the database. But again, yes, you can display the data in a particular format you want. That we will study further also. ठीक है, ये है जब हम कोई फंक्शन यूज नहीं करके जो जैसा डेटा स्टोर है वैसा ही दिखाना चाहते हैं, तो डिफॉल्ट डेटाबेस में ऐसे ही स्टोर होता है, वही दिखेगा. बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले द डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, यू कैन डू दैट आल्सो. वी आर गोइंग टू लर्न दैट. ओके, यहाँ तक जो सीखे हो, जैसे हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग द डेट वैल्यू एंड हाउ टू इंसर्ट द डेटा यूजिंग द डेट वैल्यू, यहाँ तक क्लियर है? ये दो चीजें Yes, क्लियर ma'am. है? It's clear. ओके ओके. नाउ हमें एक बार फिर से बताइए ना. व्हिच वन? मैम ये डेट वाला मैं अभी भी ज्वाइन किया हूँ. व्हाई आर यू लेट, पहले ये बताओ. व्हाई आर यू लेट? क्लास कब से स्टार्ट होता है? मैम मैं तब से ज्वाइन कर रहा था, हो ही नहीं रहा है. ओके ओके. Okay, I am repeating. See, क्रिएशन से ही बता रही हूँ फिर से. क्रिएशन वाला स्क्रीन ऊपर नहीं आएगा. Okay. See, here I have used created the table using the date value like this. Create table, table name. Create table का कमांड तो सबको आता है. But how can you use a field with the date value like this? Create table, table name, then field name, data type, size of the data type दूसरे डेटा के लिए लगता है. लेकिन when you are going to use the date value, what you have to use? You have to use the field name, then only you have to specify the data type as date. No size need to be used. Got it, Aditya? Yes, ma'am. Okay. Then after that, after creating the table, okay, after creating the table, how will you insert the date values to the table? Insert into table name values, then name of the student हो तो varchar था. Now when you are going to insert the data for date, then you have to use this format. This is the default format. What is the default format? YYYY, 4-digit year का, then hyphen, then 2-digit month का, then hyphen, then 2-digit date का. This is the default format, and you have to write it in the single quote. That means when you are giving the value, this is a string, but when the data will be stored in the system, then it will be automatically converted to date. Because we are using the default format, we don't need to specify any function for this. This will be done by default. Clear?
Yes, ma'am. कैसे डेट इंसर्ट करना है? ओके, नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट अ डेट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, if you want to insert a date in a particular format, then what you have to do specifically, you have to use a particular function str to date. This is a particular function which converts a string to date. ठीक है? Why you are having why do you have to use this function? Because you are not using the default format here, you are using some other format. What format you are going to use? dd hyphen mm hyphen yyyy, in this format you are going to use. So क्या करना है, पिछली बार की तरह सिंगल कोट में डेट को लिखो, देन कॉमा देके कौन सा फॉर्मेट तुम यूज कर रहे हो वो भी तुम्हें लिखना है. Since you are using ddmmyyyy and you are separating it by hyphens, so you have to write it down %d hyphen %m hyphen %capital Y. Why capital Y? Because capital Y specifies 4 digit of year and small y specifies 2 digit of year. Okay. So in this way you can insert a date in any format you want. ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ है? ये Yes, वाला ma'am. स्टेटमेंट क्लियर हुआ है? ओके, नाउ द थिंग यू हैव टू नो इज दैट whatever format you are using for insertion, database में जो default value date का store होगा, that will use the default format only. ओके, सो देखो डिफॉल्ट फॉर्मेट में ही तुम यहाँ पे कुछ दूसरे फॉर्मेट में इंसर्शन किए थे एंड इट विल हेल्प यू टू डू द इंसर्शन इन सम अदर फॉर्मेट, नथिंग एल्स. जो स्टोर होगा वो डिफॉल्ट फॉर्मेट में ही स्टोर होगा. देखो यहाँ पे YYYY हाइफन DD हाइफन MM इस फॉर्मेट में ही स्टोर हुआ है. क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, now say you want to see the name in some particular format. डिफॉल्ट फॉर्मेट में तो स्टोर हो गया, अगर हम डायरेक्टली स्टार यूज करेंगे तो डिफॉल्ट फॉर्मेट यूज होगा. बट इफ यू वांट टू शो द रिकॉर्ड इन some particular format, then how will you show it? Okay, that I am showing you. See, I have changed the format. Okay, how I am changing? Using the date format function. Date format is a function which changes the stored data in the of type date in a particular format you want. Okay, so यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अगर हम DOB करते तो हमारे इस फॉर्मेट में दिखाता, बट आई वांट टू शो द डेट इन सम अदर वे. So what for that, what we are doing, we are using the date format function, then we are giving the field name किसको हम change करना चाहते हैं, then we are writing the format. Now for that I will teach you all these what these things mean. Capital D. Capital D displays the date in this format. 15th, 6th, 2nd, 1st, 3rd, in this way. Okay, the date will come and then RD, TH, ST, whatever it will be needed, it will come there. In this format, capital D shows. Okay, then what capital M shows? Capital M gives the full name of the month. Capital M gives the full name of the month. So at first I am showing the data in TH or ST or RD added with it, then space, then full name of the month, then I need a comma beside that, then I need 4 digit year, so %y. So this format I want to, in this format I want the data to be displayed. So I am using date format function, then the date of birth, that means the field name, then the format I want to use within single quote. This is the code for doing this one. Then from birthday as usual you write in the code. Okay, got it? Understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Note it down. You do one thing, note down these codes. Yes, ma'am, I have noted down.
Everybody noted it down? Yes, ma'am. I'm not getting your voice. Please tell me. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now another thing. Say I want to see the system date. I want to see the system date. Means system date means what day your system, your computer is set to. Okay. कंप्यूटर में कौन सा डेट सेट किया गया है वो मैं देखना चाहती हूँ. So for that we will use this function. This. Okay. For showing the system date. And we use this function for showing the time only, time part only. System date will show both the date and the time, and the time will show only the time. You can use the now function also for showing the date and the time. Okay, got it? Sys date, card time, and now. Yes, ma'am. You have to note all these things down in your classwork copy. Term 2 का जो classwork copy है, you have to note all these things. अगर सिस्टम डेट को तुम पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो, then what will you do? If you want to show the system date in a particular format, then what will you do? Tell me. मैम डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट फंक्शन के अंदर हम लोग सिस Right. डेट को डाल देंगे. Right. So we can show the sysdate in a particular format in this way using the date format function. Ma'am, can you want show a cur time function? Yes. Here it is. I think it is shown. Here it is. Okay, ma'am. Okay. Then we will we will know another function, that is date add function. Say I want to add a certain number of days to a particular date. Okay. So for that, what we will do in this way. This is a particular date and I want to add 31 days to it. Then the date after 31 days to it will be shown here like this. Understood this one? Understood this one? Yes, ma'am. Okay. Then वैसे ही हम टाइम भी ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ आवर या मिनट ऐसा कुछ हमें ऐड करना है, दैट आल्सो वी कैन डू. जैसे कि डेट हम ऐड कर सकते हैं, वैसे ही टाइम भी ऐड कर सकते हैं. करंट टाइम के साथ हमने 1 hour 5 minutes 9 seconds ऐड कर दिया, सो वी आर गेटिंग दिस वन. दो डेट्स है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, सोचो कि हमारा कितना एज है, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ और सिस्टम डेट के अंदर जो डिफरेंस है, दैट वी कैन कैलकुलेट. ओके. सो इन दिस वे दो डेज के अंदर कितना डेज का डिफरेंस है, दैट वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस. इन दिस वे. तो पहले तुम्हें क्या लिखना है, पहले तुम्हें बाद का जो करंट डेट है वो लिखना है. न्यू डेट पहले होगा, ओल्ड डेट बाद में होगा, तो तुम्हारे पॉजिटिव में आंसर आएगा. उल्टा करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा. ठीक है. उल्टा करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा.
पर्टिकुलर डेट में से तुम्हारे पास पूरा डेट है, उसमें से सिर्फ डे वाला पोर्शन तुम उठाना चाहते हो, सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस वन, डे फंक्शन। ये जो पूरा डेट है, इनमें से डे वाला पोर्शन तुम सिर्फ निकालना चाहते हो, सो दिस इज द फंक्शन फॉर दैट। अगर तुम वीक में कौन सा डे है, वीक में कौन सा डे है वो वाला, ये तुम देखना चाहते हो, सो डे नेम इज द फंक्शन फॉर दैट। डे नेम के अंदर पर्टिकुलर एक डेट डाल दोगे, तो वीक में वो कौन सा डे में आता है, that will be shown. And similarly, if you don't want to show the day name, instead you want to show the day number, 1 to 7 के अंदर कितने नंबर के डेट में वो आता है, so for that you have to use the function day of week. अगर तुम पर्टिकुलरली सिर्फ मैम एक बार फिर से डे ऑफ वीक को बोल, मतलब एक्सप्लेन कीजिए मैम। सैटरडे है ना, 2007 का दिसंबर का 15 नंबर का जो डे है, दैट इज सैटरडे। ओके, तो सैटरडे मतलब 7th डे, ये संडे से शुरू होता है। संडे मीन्स 1, मंडे मीन्स 2, ऐसे करके सैटरडे मीन्स 7 होता है। तो इफ यू वांट टू शो द डे ऑफ नंबर ऑफ डे ऑफ द वीक, कितने नंबर पे है, अगर वो संडे होता तो उसके लिए 1 शो होता, अगर वो मंडे होता तो उसके लिए 2 शो होता, ये सैटरडे है तो इसके लिए 7 शो हो रहा है। क्लियर? ओके मैम। अगर तुम सिर्फ ईयर वाला पोर्शन दिखाना चाहते हो, फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस वन, ओनली द ईयर पार्ट विल कम। सिमिलरली अगर तुम सिर्फ मंथ वाला दिखाना चाहते हो, only the month portion will come. अगर तुम मंथ दिखाना चाहते हो बाय नेम, then month name function will work. अच्छा, अभी हम कुछ फॉर्मेट सीखेंगे, जैसे %d, %y, %m, इस तरह के फॉर्मेट में हम सीख चुके हैं। कुछ और भी फॉर्मेट हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, से आई वांट टू शो द डेट, बट डे पोर्शन शो नहीं करना है। कभी कभी हम दिखाते हैं ना, मन, सन, THU, TUE, short format, only the 3 letters will come. In that format, if you want to show, then %A, this one will work. All of you are having Sumita Arora book? Yeah, ma'am. Or in the SQL part, I think there is a list of this type of functions, date functions. From there also you can have a look. अगर मंथ को तुम शॉर्ट फॉर्म में दिखाना चाहते हो, देन %B विल वर्क। और बाकी हमने कैपिटल डी सीख लिया है, थर्ड, फर्स्ट, ऐसे करके। स्मॉल डी 2 डिजिट डेट दिखाता है, ठीक है। आवर अगर तुम दिखाना चाहते हो, मतलब अभी 10:20 हुआ है, तो आवर अगर हम दिखाना चाहते हैं सिस्टम डेट के अनुसार, तो कैपिटल H विल शो द आवर इन 23 hours format. अभी सुबह है तो कैपिटल H और स्मॉल h, both of them will show the my voice is coming to you? Yes, ma'am. Okay. So capital H or small h, both of them will give you the same output. But now if I am showing you, if I would show this thing in the evening or after 12 o'clock, then for capital H, 13, 14, 15, 16 will come up to 23. And for small h, it will again repeat 1, 2, 3, 4 like this. Okay.
It will give you 24 hours time, it will give you 12 hours time. Then capital M we know to show the full month name. Capital small m we know 2-digit month number. Okay. AM PM अगर दिखाना चाहते हैं हम, then %P we will use. M. Okay. Date of week we know. Capital Y we know 4-digit year. Small y we know 2-digit year. Let me check the syllabus if something else is missing. Now date, month, month name, year, day. So all the functions we have covered, and we have done many more extra functions also in the date functions, so that if any query regarding the date comes, you can use these functions. बाद में हम लोग कुछ queries करेंगे जहाँ पे हम लोग ये वाला date functions use करेंगे, लेकिन query शुरू करने से पहले it is very important that you revise all these functions जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं वो सब याद रखना है, so that you can use all these functions in your queries. Okay. So any question regarding this? किसी को कुछ रिपीट करना है या देखना है कोई पोर्शन? Ma'am, at the last part you showed us means AM PM. That thing can you show again? Yes, AM PM. Yeah. Yes, ma'am. This one, %P. Okay, ma'am. Anything else? No, ma'am. Okay. Then I am stopping the recording here.